बट अब हमें बताइए कि आप कैसे थे पढ़ाई में? लाइक हुँ, हमेशा से लाइक बचपन में हम जैसे देखते हैं रॉकेट हुँ, लॉन्चेस या फिर आसमान की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कोई सैटेलाइट भेजी। सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, जैसे हुँ, हम लोगों ने बचपन में देखा। हुँ, बड़ी खुशी होती थी। ऐसा लगता था कि देश के ऊपर में ना हुँ, गर्व होता था कि देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ राइट। रहा है। आपका क्या कनेक्शन था बचपन में? इसरो के साथ में या फिर सिंपली रॉकेट आसमान में देखते वक़्त? So I would understand before fifth class and post fifth class there were two eras. हुँ, Before fifth class I was not interested in anything except ओके। playing and things like that. But after fifth class, as I saw that there were some incidents where I really used to look up to my father as an idol for me. हुँ, हुँ। But when he used to give up on me, then that time it used to hurt me somewhere deep dive. व्हाट डू यू मीन बाय गिव अप ऑन यू? Give up on you when he used to lose faith, lose hope on me. कि भाई, no, this was not the standard I expected, from an elder son. So especially, he was very much committed for my academics. He was very much worried always about my academics. So fifth sixth तक तो हम कहाँ इतना पढ़ते थे नहीं कुछ तो ज़्यादा. आप बताना चाहेंगे वो हाँ, दृश्य जब आपको पहली हाँ. दफ़ा लगा कि पिता So this first time, I think it was my sixth class or seventh class. I don't remember exactly, but we came from on that standard parent teacher meeting, and earlier he used to have a scooter and I used to sit on the back and he used to drop me at my home. या But that day he left me, far away, and he said, "देख लो तुम्हें लाइफ में जो करना है जैसे करना है. It is your life. You decide what you want to do." And he left from there with a very तो होता है ना कि बहुत निराशाजनक. तो तो कैसा ड्यूरिंग लगा कि दैट मतलब हाफ एन आवर हुँ, वॉक, जो चलते हुए आधे घंटे, वो पहली बार था जब मैं लाइफ में सीरियसली कुछ सोचा था कि नहीं भाई, कुछ तो गलत कर रहे हैं अगर पापा ऐसे निराश हो रहे हैं तो. दैट वाज़ द टाइम आई स्टार्टेड फाइंडिंग. वो पहला क्वेस्ट था मेरा कि नहीं भाई, कुछ तो ढूँढना है लाइफ में कि मेरा पर्पस क्या है एग्ज़िस्टेंस का, मेरा पर्पस क्या है कुछ भी करने का. हुँ, सो वहाँ से आई स्टार्टेड बिकमिंग सीरियस इन थिंग्स. आई स्टार्टेड सीइंग अराउंड, क्वेश्चनिंग ईच एंड एवरीथिंग. जी। And the best place where you can question each and everything is physics, chemistry, right? Sciences. So, slowly I started developing deep attachment for it. And that was the time science was telling all the answers. Sky blue क्यों है, सुबह रेड क्यों होता है, शाम आपका को पसंदीदा क्या था पीसीएम में? physics फिज़िक्स। was क्यों always, खास है फिज़िक्स आपके हिसाब से? because it was helping me explain each and everything around me, right? एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड टू योरसेल्फ। Explain to me हाँ, हाँ। and understand the depths of it, how things work, how everything is running around. तो So इक्वेशन से दोस्ती होने लगी थी? more than equations, the ability, that power to be able to predict something by from those equations was something very addictive to me. हुँ, Okay, well, I can predict कि if I throw a stone at this velocity, where it will land. And the same, and then I used to say, okay, is principles, same principles what we are studying at a fundamental level, same principles को use करके they throw missiles, right, during war. They are throwing rockets, they are throwing satellites, right? And then that was the time I started developing fascination कि okay, science is giving you some kind of a power, some kind of a ability to control हुँ, nature around you, right? And so it, as I said, power is addictive, so it was, that power was getting addictive here. And it then I started pursuing it more seriously as I came towards my 12th and या stuff like that. And then I thought that what's the best place to study science. I came to know IITs.